Inspector Sir, HODs, faculties, and my dear students. Good afternoon to all of you. Students, today we are organizing a session under Institution Innovation Council Cell on the topic Innovation, Prototype Validation and Converting Innovation into Startups. For this, we have the eminent speakers, Twinkle ma'am, Vandana ma'am, Neha ma'am. So, to go ahead with this, I request Twinkle ma'am to please come on the stage and put the light on today's issue, that is innovation, prototype validation and converting innovation into startups. Twinkle ma'am, please. Everyone present here. Today I am giving my views on the topic innovation and the converting innovation into startups. Firstly, what is innovation? Innovation is the practical implementation of the ideas which results in the introduction of new services. What is startups? Startups are the companies or the ventures which are focused on a single product or services which the founders want to bring in the market. Now, how to innovate the innovation into a startup? Innovation is the critical for startups. First step is you should always define your problem clearly. The very first step to innovation is to clearly define the problem which you are trying to solve. This may seem obvious, but this may seem obvious. Next step is you should brainstorm your ideas. Once you have defined the problem, it is the time to brainstorm the ideas. When you are brainstorming, it is very important to be open to the new ideas. Even if an idea seems crazy at first, it should be turned out to be a great solution. Next, you should be willing to take the risk. Innovation requires taking the risk. You should always test your ideas. Once you have a few ideas, it is very important to test them out. This can be done through the prototype or the beta test. The final step is that you should always improve. Finally, once you have a working solution, it is very important to continue iterating and improving upon it. It should always room for improvement. Director sir, staff members and my dear student, very good afternoon to all. Today I am sharing my views on the topic innovation. Innovation is the process of taking an existing idea or product and developing in a new way. It can be anything from the creation of the first computer to the invention of new technology. Innovation is not just about what we create, but also how we create it. Innovation has become crucial in today's society as it has helped us to solve problems and make progress. Innovation is the process of creating something new, and in this digital age, it is one of the most important aspects of a company. Innovation is a process that includes generating ideas, testing them, and making changes to improve the ideas. It can also be used by individuals in order to solve their own problems or come up with new ideas for creative projects. My staff members and all dear students, today I am here to present my views on very important topic, prototype validation. What is prototype validation? It is when you have determined what user problem you need to solve, but you haven't yet figured out how to solve it. It's a later stage of concept testing that allows you to evaluate how someone feels about a new product before you release it. Corporations and businesses seeking to innovate or create products and services often find themselves in unpleasant situations where they have wasted large amounts of time, money and resources while designing an idea or product that ultimately fails to meet the expectations and serve its purpose. As a result, innovation and product design processes have earned a reputation of being expensive, inefficient and often resulting into a failure. A prototype is a scaled-up materialization of an idea or product which allows to test and validate the technical validation, design validation and business validation. आज का है मैं हिंदी और पंजाबी दोनों मिक्स में करूँगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट्स, आज का सेशन है वो है इनोवेशन,
prototype validation and converting innovation into a startups. Right? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब आपको स्टार्टिंग में आपको लेक्चर मिला था, आपको मैंने कहा था कि हमारे कॉलेज का एक सेल है दैट इज इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन सेल. ठीक है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल वो है कि जो हमारे कॉलेज में कोई भी आप अगर किसी आपके पास आइडिया है, इनोवेट करना चाहते हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करना चाहते हो, bring to us with that idea. ठीक है, वो आइडिया हमारे पास come to us, वो आइडिया हमारे पास लेके आओ, we will work on that. ठीक है, so basically this all is about ये जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए. ठीक है, converting innovation into startups. आपको क्या बनाने के लिए? आत्मनिर्भर. आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सको, जो आपकी इनोवेशन करते हो उनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में ला सको. ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है. ठीक है, आत्म भारत. ठीक है, इसका क्या मोटिव है? वो नहीं है कि आप कॉलेज आ रहे हो, बाहर बैठो, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर. ठीक है, मोस्टली आपने इंजीनियर बनना, कुछ ऐसी इनोवेशन कुछ करो सो दैट कि आपके फ्यूचर में आपके काम आ सके. सो ये बच्चों ने बहुत ही अच्छा होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, विंड पावर प्लांट बनाया हुआ है, डे नाइट सेंसर्स हैं बच्चों ने बनाए हुए. सो ठीक है ना, आप देखोगे कि ये कैसे वर्क करते हैं. बच्चों के आइडिया, ये भी एक टीम है, इनके कुछ बच्चे भी आए नहीं, इट्स अ टीम. ये टीम का एक कंसेप्ट होता है. ऑब्वियसली पहले उनके पास आइडिया आया, देन एक टीम जिनमें अभी आपको दिखाएंगे इसकी वर्किंग हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो कैसे वर्क करता है. सत्यप्रकाश, पुट द लाइट ऑन दिस डे नाइट सेंसर. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बेसिकली एक डे नाइट सेंसर है. जब कभी अंधेरा होगा तो ये चलेगा. जैसे अभी पकड़िए, जब इस सेंसर पर जब अंधेरा होगा तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा. ठीक है, जब अभी घर पे आप कपड़े वगैरह डालते हो तो बारिश आ जाती है अचानक, तो जब भी इस पे एक बूंद गिरेगा पानी का तो ये बजने लग जाएगा. तो ये ऑन होगा तो इसके साथ ये भी चलेगा. जब ये घूमेगा, रोटेट होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, तो इसमें जो लाइटें लगी आपके घर की जो भी सब चलेगा. इसमें लाइट, पंखे सब चलेंगे इसमें. दिस इज द टीम. ये टीम है, कुछ उनके मेंबर्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. इन्होंने ये उस पर वर्कआउट किया. पहले उन्होंने आइडियाज लिए. ठीक है, आइडिया के बाद उस आइडिया को प्रोटोटाइप तैयार किया. अब अगर इस प्रोटोटाइप को हमने मार्केट में लेके आना है तो बैंक उस पर फंडिंग करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, उस पर पैसे लगेंगे. ठीक है, बहुत ही अच्छा बच्चों ने ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनाए, इसमें अभी उनके टीम के कुछ मेंबर्स नहीं है. मैं एक इनकी टीम्स के मेंबर्स के नाम ले लूं. कमलेश, गोविंदा, मनदीप सिंह, सत्यप्रकाश कल्याण, सुखविंदर कांत, विनय कुमार, राहुल शर्मा, सूरज शर्मा, बचत्तर सिंह, कुलवीर सिंह, रोहित कुमार, रवि कुमार एंड रंजीत सिंह. एक बार बच्चे जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट्स जो है प्रोटोटाइप से तैयार किए. इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल जिस ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ਼ੂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੀਮ ਜੋ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਜ਼ੀਬਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਏਬਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਤੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ IAC ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਵਰ, ACD ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।